Okay, dear students, from today we will start a new chapter, that is chapter number 7. The name of the chapter is coordinate geometry. Now you have studied certain things about this coordinate geometry in your earlier classes. You have learned how to use the graph paper and you have learned how to plot the points in the different axes. This particular chapter is again very easy, very simple. Just like arithmetic progression, the whole chapter revolves around certain formulas. Over this chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry, has 3 concepts and 3 formulas. So if you learn these 3 concepts and 3 formulas properly, you can solve any sum related to this chapter. So if you know these 3 formulas properly and you know how to apply those formulas properly, then scoring in this chapter will come very, very easy. So what are the 3 concepts that we are going to learn over here? These 3 concepts are divided across 3 exercises. Exercise 7.1 is based on the first concept and first formula, that is distance formula. यानी कि जो हम पूरी exercise 7.1 solve करेंगे उसमें हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करनी, एक ही कंसेप्ट यूज करना है, and that concept, that formula is distance formula. Similarly, your whole of exercise 7.2 revolves around sectional formula. So if you learn that sectional formula and application of sectional formula, the whole exercise will revolve around this formula. And your third exercise, that is exercise 7.3, is based how to find area of triangle. Now here we are not going to find the area of triangle using the formula half into base into height. Okay? If any triangle is given in a coordinate axis having 3 different points A, B and C whose coordinates are given, then to find area of such triangle you will be given one formula, and the whole exercise 7.3 is based on the formula to find the area of triangle. So today we are going to talk about the first concept, that is distance formula. Now, when distance is taken in a linear form, when you travel on highway, you see different milestones. Those milestones give information about the distance of the destination, कि जो आपका destination है वो कितना किलोमीटर दूर है. But how to find the distance between the 2 points when they are given in a coordinate axis or on a graph paper? As for example, suppose ये आपके 4 coordinate axis है. This is point A and this is point B. ठीक है? I want to find the distance between these 2 points, that is AB. So suppose I take the coordinates of A. आप देखेंगे तो A के जो coordinates हैं उसका S coordinate है 5 और Y coordinate है 1. If you extend this point on x axis, it is 5, and if you extend on y axis, it is 1. Means the coordinate axis of this point A will be represented as 5, 1. तो यहाँ पे मैंने लिया है coordinates of A is 5, 1. Why? Because जो A है उसकी coordinate values क्या है? X coordinate is 5 and Y coordinate is 1. So the value of coordinate axis of point A is 5 and 1. Similarly, talking about B को अगर आप extend करेंगे तो x axis पे 1 पे आता है, y axis पे 2 पे आता है और y axis पे 2 पे जाता है. So you can say that coordinates of B are 2, 5. If I want to find the distance between these 2 points, I have to use the distance formula. तो ये जो पॉइंट्स A, B है उसको मैंने यहाँ पे लीनियरली रिप्रेजेंट किए हैं. दिस इज माय पॉइंट A, दिस इज माय पॉइंट B. As seen in this graph, the value of point A is 5, 1. मैंने यहाँ पे लिखी है उसकी वैल्यू है 5, 1, and value of B is 2, 5. I have written here 2, 5. So whenever you want to find distance between 2 points in a coordinate axis, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 and y1. So 5 is x1 and 1 is y1.
सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, उसके x and y कोऑर्डिनेट विल बिकम x2 and y2. So in this particular case, value of x2 is 2 and value of y2 is 5. Again, whenever you want to find distance between 2 points in coordinate axis, the coordinates of point A are known as x1, y1. X coordinate is always written first, y coordinate is always written second. So these are my values of x1 and y1. तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है B. तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2. In this particular case, the value of x2 is 2 and y2 is 5. Now, the value of modulus AB by modulus AB, because distance is always considered positive. अगर आप ये फॉर्मूला डालो तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू जब कोई वैल्यू मॉड्यूलस में लेते हो तो नेगेटिव वैल्यू आल्सो बिकम्स पॉजिटिव. सो दैट मींस वैल्यू ऑफ AB is always taken as positive. So modulus AB is equal to, this is a formula, square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Now this is the distance formula between point AB. अगर पॉइंट PQ है तो यहाँ पे PQ होगा, अगर दो पॉइंट CD है तो उसकी वैल्यू CD होगी, अगर दो पॉइंट MNN है तो उसका डिस्टेंस MN होगा. Now this is the distance formula, but while solving the sum, to avoid writing this root again and again, generally we take square on both sides. तो exact distance formula ये है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे. We will take squares of the values. तो जो AB था वो AB का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू है, और स्क्वायर लिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट चला गया. तो उससे क्या फायदा होगा कि हर स्टेप में आपको रूट लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है. आप जब AB का स्क्वायर ले लेते हो तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, AB का स्क्वायर आएगा. फाइनल में जो AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी AB. समझ में आया? तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. मेक अ ब्रैकेट एंड राइट डाउन एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस AB is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. But while solving the sums, we will take the square. तो यहाँ का स्क्वायर लिया तो AB became AB square. यहाँ पे स्क्वायर रूट चला गया. Now we will put the values. फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1 whole square. x2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैंने x2 की जगह लिखा 2 माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? वैल्यू ऑफ x1 इज 5, तो यहाँ पे लिखा 5 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. So what is value of y2? Value of y2 is 5 minus what is value of y1? 1 whole square. Now 2 minus 5 gives me minus 3. So here I will have minus 3 whole square plus 5 minus 1 whole square, that is 4 whole square. Now minus 3 का जब स्क्वायर करेंगे नेगेटिव टर्म है उसका भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा. So square of minus 3 is 9, square of 4 is 16. 9 plus 16 is 25. तो ये वैल्यू हमारी हुई नॉट ऑफ AB, ऑफ AB स्क्वायर, लेकिन हमको तो डिस्टेंस AB फाइंड करना है. तो जो हमको डिस्टेंस AB फाइंड करना है इसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो इफ वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर इज 25, दैट मींस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस AB will be root of 25, that is 5 units. Now make one thing very clearly, यहाँ पे 25 का रूट निकलता है. हर बार ऐसे रूट निकले ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर AB स्क्वायर 10 आता है तो योर आंसर विल बी रूट 10. आप आंसर को रूट के फॉर्म में रख सकते हो अगर उसका फर्दर रूट निकलता नहीं है, ठीक है. तो अगर आंसर आए AB स्क्वायर का आंसर आ जाए 5, तो 5 का तो रूट नहीं निकलता. तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ AB? वैल्यू ऑफ AB विल बी रूट 5. लेकिन यहाँ पे AB स्क्वायर 25 आया, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है. तो AB is equal to 5 units. Now I am confident that you are able to solve the sums using distance formula. Okay. Now we will solve certain sums of exercise 7.1 which are based on this distance formula. Okay, dear students, after getting the proper understanding of distance formula, we start exercise 7.1. As I said during the previous lecture,
that exercise 7.1 is totally dedicated to one formula, that is the distance formula. So here in question 1 there are 3 questions, points are given, you need to find the distance between those points. Question 1, points given are 2, 3 and 4, 1. So suppose this is my A and this is my B. Okay, so these are suppose coordinates of point A, another point is suppose B. So now this is my x1 y1 and this is my x2 y2. Okay, so now by distance formula I will have what is AB square. AB square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now let us put the values. x2, what is value of x2? x2 की value है 4 minus x1, x1 की value है 2 whole square plus y2 is 1 minus the value of y2 is 1 and value of y1 is 3 whole square. So 4 minus 2, that is 2 whole square plus 1 minus 3 is minus 2. So here I have minus 2 whole square. Now 2 का square भी 4 होगा, minus 2 का square भी 4 होगा, तो यहाँ पे आया 4 plus 4. This is equal to 8. Now dear friends, 8 है, उसका डायरेक्ट रूट नहीं आएगा, but I can divide this 8 as 4 multiplied by 2. क्यों? क्योंकि 4 का रूट आता है. So therefore distance AB, 4 का रूट क्या होगा? 2. और अब 2 का रूट नहीं होगा तो my answer will be 2 root 2 units. Okay, same logic in second sum. This is your x1 y1 and this is your x2 y2. Again distance formula will be same, distance between these 2 points AB square will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब हमको कुछ और नहीं करना है, हमको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है. x2 minus x1 whole square, x2 that is minus 1 minus x1 is minus 5, so minus 5 और उसका हमको लेना है whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 की वैल्यू है 3 minus यहाँ पे वैल्यू है 7 whole square. Now this minus will become plus, so I have minus 1 plus 5 whole square plus 3 minus 7 whole square. So 5 minus 1 that is 4 whole square plus 3 minus 7 यानी minus 4 whole square. अब 4 का square हो या minus 4 का square हो, value will be 16. So here I am having 16 plus 16 that is equal to 30. तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 into 2. So therefore जब हम इसका रूट लेंगे तो डिस्टेंस AB 16 का रूट होगा 4. ठीक है, 2 का रूट नहीं होता, यानी 4 root 2 units means distance between these 2 points will be 4 root 2 units. अब अगर आप थर्ड सम देखेंगे तो उसमें इंटीजर्स की जगह हमको A और B दिए हुए हैं, तो लगेगा कि ये सम तो काफी डिफिकल्ट है. नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. You have to use the same formula and same logic to get the answer. ठीक है, सेम लॉजिक, यानी यहाँ पे ये हमारे हुए x1 y1 और ये हमारे होंगे x2 y2. ठीक है, this is our x1 y1, this is our x2 y2. Now we need to find the distance between these 2 points. Okay, तो इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अभी यहाँ पे AB है तो मैं इसको P लूंगा, इसको Q लूंगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो P Q हो जाएगा. तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन यू कैन आल्सो टेक कैपिटल A एंड कैपिटल B, नो इशू. So suppose this point is P, this point is Q, so distance between these 2 points, that is PQ square, will be equal to same logic. What is the formula? जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में लिया था, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, let us put the values. x2 that is minus a minus x1 is again a, so minus a whole square plus what is y2? y2 is minus b minus what
is y1? Is again p whole square. So this is in short minus a, that is minus 2a whole square, plus minus b, that is minus 2b whole square. Now when you take the square, minus 2a whole square will become 4a square plus 4b square. 4a square plus 4b square. Now from these two terms 4 is common, so in bracket I have a square plus b square. Now ये जो वैल्यू आई है वो pq स्क्वायर की आई है, हमें pq स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस pq. So to get that distance pq, okay, we have to take root. तो अगर हम इसका रूट लेंगे तो pq is equal to 4 का रूट होगा 2 और इसका रूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b square units. So dear friends, again the whole exercise 7.1 is based on the formula which is known as distance formula. अगर आप distance formula को properly use करना सीख गए तो whole exercise will be very easy, very simple for you. तो यहाँ पे जो अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने प्लेनली डिस्टेंस फार्मूला को यूज किया है, उसका अगला कोई एप्लीकेशन किया नहीं है. तो जब हम आगे वाले सम्स करेंगे उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला का थोड़ा डीप यूज करके सम्स सॉल्व करना सीखेंगे.